morning, students. Today we are going to start the exercise of this chapter, chapter number 6, Combustion and Flame. In previous lecture, we completed the explanation of this chapter. Now we are going to start the exercise. Firstly, we start the choose the correct option. First, choose the correct option is what is the substances which gives heat and light on combustion called. What is a substance which gives heat and light on combustion? जो ऐसा सब्सटेंस जो हीट एंड लाइट देता है कंबशन पर उसको क्या बोलते हैं? फ्लेम, फ्यूल, कंबशन या नन ऑफ देम? आंसर इज फ्यूल. What is the substance which gives heat and light on combustion called fuel? Okay. Now, next one. By which reaction in the sun are heat and light produced? कौन सी रिएक्शन से हीट और सन हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है? न्यूक्लियर रिएक्शन. ऑप्शंस आर न्यूक्लियर, कंबशन, स्पॉन्टेनियस या नन ऑफ देम. तो आंसर इज न्यूक्लियर रिएक्शन. इन न्यूक्लियर रिएक्शन सन आर heat and light produce. Okay. Now, next, which of the following is a non-combustible substance? Non-combustible. छेफ, एस्बेस्टॉस, पेपर या कॉल. जो छेफ है, पेपर है, वो कॉल है, वो तो कंबस्टिबल है. पर जो एस्बेस्टॉस है वो नॉन कंबस्टिबल है. वो ग्रे कलर का होता है, वो नहीं जलता है. राइट. सो इट्स अ एस्बेस्टॉस. Fourth one, which of the following substance does not burn with a flame? Which of the following substance does not burn with a flame? कौन सा substance burn नहीं होता है with the flame? Which of the following substances does not burn with the flame? कैम्फर, LPG. कैम्फर मतलब कपूर. LPG, कोक या केरोसिन. जो कोक है वो बर्न नहीं होता है विद द फ्लेम. कोक डज नॉट बर्न विद द फ्लेम. ओके. नाउ नेक्स्ट वन, विच इज नॉट यूज्ड एज अ फायर एक्सटिंक्शर. विच इज नॉट यूज्ड एज फायर एक्सटिंक्शर. वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या सैंड. Not used as a fire extinguisher. Answer is oxygen. Oxygen is not used as a fire extinguisher. Okay. Now, sixth number is, which of the following is not a type of a combustion? Which of the following is not a type of a combustion? Rapid combustion, spontaneous combustion, एक्सप्लोजन या ब्लास्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ कंबशन? जो रैपिड कंबशन है इट्स अ टाइप ऑफ. स्पॉन्टेनियस ऑल्सो टाइप ऑफ कंबशन. एक्सप्लोजन ऑल्सो टाइप. पर ब्लास्ट इज नॉट अ टाइप ऑफ अ कंबशन. ओके. नाउ नेक्स्ट वन, विच व्हाट इज द कलर ऑफ आउटर of the candle flame? Blue, yellow, black या red. Outermost is blue in color. Right? What is the color of outermost zone? Blue. Now next one, eighth one, which of the following fuels has a higher calorific value? Highest calorific value होती किसके, कौन से फ्यूल की? Which of the following fuels has higher calorific value? हाइड्रोजन, मीथेन, पेट्रोल या डीजल? हाइड्रोजन जो फ्यूल है हैज़ अ हायर कैलोरिफिक वैल्यू. ओके. नाउ नेक्स्ट नाइन्थ वन, विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ ग्लोबल वार्मिंग? विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल?
CO2, carbon dioxide, right? Options are nitrogen oxide, sulfur dioxide, ozone या carbon dioxide. Carbon dioxide is responsible for the global warming. Okay. Now we are going to start filling the blanks. First is burning of wood and coal causes dash of a air. Burning of wood and coal causes dash of a air pollution. बर्निंग ऑफ वुड और कोल किसके कॉज है? पोल्यूशन के कॉज है ना. नाउ सेकेंड वन, ए लिक्विड फ्यूल यूज इन होम्स इज डैश. ए लिक्विड फ्यूल यूज इन होम्स इज अ kerosene. Liquid fuel used in homes is kerosene. Now, third one. Fuel must be heated to its ignition temperature. Fuel must be heated to its ignition temperature before it starts burning. Okay. Burning of wood and coal causes a pollution of air. A liquid fuels used in homes is kerosene. Fuel must be heated to its ignition temperature before it starts burning. Okay. Now fourth one, fire produced by oil cannot be controlled by dash water. Fire produced by oil cannot be controlled by water. Okay. Now next fifth one, for combustion dash gas must be present. For combustion dash gas must be present, oxygen. Okay. Now next sixth one, in the sun heat and light are produced by dash reactions. In the sun heat and light are produced by nuclear reactions. In the sun heat and light are produced by nuclear reactions. Now seventh one, the lowest temperature at which a substance catch fire is called its ignition temperature. The lowest temperature at which a substance catch fire is called its at the top of a matchbox, a chemical dash is used as a combustible substance. At the top of a matchbox, कौन सा chemical use होता है? Potassium chloride. At the top of a matchbox, a chemical potassium chloride is used as a combustible substance. Clear? Now start true or false of this chapter. First is food is a fuel for our body. It's a true. Food is a fuel for our body. It's a true. Now second one, when magnesium strip is burnt, magnesium chloride is produced. Not magnesium oxide produced होता है, ना कि chloride produced होता है. When magnesium strip is burnt, magnesium chloride is produced. It's a false. When coke is burnt, flame is produced. होता है ऐसा? No. ऐसा नहीं होता. So it's a false. Now fourth one, the fuel is only in liquid state. The fuel is only in liquid state. It's false. Now fifth one, the middle zone of a candle flame is yellow colored. It's a true. वो येलो कलर की मिडल जोन येलो कलर का ही होता है. द मिडल जोन ऑफ अ कैंडल फ्लेम इज अ येलो कलर्ड. इट्स अ ट्रू. नाउ the calorific value of dung cake is very low. The calorific value of dung cake is very low.
in electrical equipment. Water is used to extinguish fire in electrical equipment. इट्स अ फॉल्स, खुद ही साथ में चिपक जाएंगे यदि हम वाटर को यूज़ करते हैं एज इलेक्ट्रिकल एक्सटिंग्विश फायर फॉर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, राइट. यहाँ पे हमने फिलिंग द ब्लैंक्स, चूज द करेक्ट ऑप्शन, ट्रू और फॉल्स को कवर अप करा है. हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे वन सेंटेंस आंसर. आज का बस इतना है, इसको आपको अच्छे से अपनी नोटबुक में राइट करना है. ओके.